Hello friends, welcome to Stock Market Pulse. I'm Nitika. Let's check the pulse of the stock market. So again I'm here with the Nifty update for coming week, and I have got one important index also which is actually ready to give the breakout. You should keep eye on this index that I will discuss in the end of the video. So to know all the level of the Nifty, stay connected till the end and smash the like button now and subscribe the channel for Nifty regular update. So let's start first with the Nifty 50 charts. Yes, Nifty 50, if we come to the chart, let's see what is happening here. Last time Nifty, Friday Nifty has given a very good sign of breakout. Yes, I am seeing a good breakout from here, breakout of this trend line. See this trend line, resistance, which is actually here in Nifty is facing resistance here. So up ये टाइम आ गया बिकॉज नीचे के लेवल पे भी इट इज नॉट रेडी टू गिव टू ब्रेक दैट लेवल 19,200 विच आई am giving since 3 4 weeks 3 4 weeks yes 1 2 3 मतलब कई दिनों से this 19,200 is not actually Nifty is not breaking this strong support. I will give that video link in I button. You can see the level 19,200 was support since last many weeks. So 19,200 has become now very very good support for Nifty, which I am not seeing it's going to break soon. But ऊपर के लेवल पे जो एक रेजिस्टेंस है which Nifty may break in coming week, which I feel which is actually 19,450 to 80 मतलब 19,480 के आसपास हियर यस 19,480 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है इफ निफ्टी 50 ब्रेक्स इट. सो एक ये again it will face a resistance here 19,600 which again I keep giving this level since last many week, which is 19,600. So 19,200 and 19,600 is actually intact. But yes, एक और resistance add हो गया which is actually I am seeing which is 19,480 के आसपास. So I feel if 19,480 is broken, it will face a resistance here 19,600, and then it will break and go up. सो लेकिन एक ब्रेकआउट यहाँ पे निफ्टी 50 को ज़रूर मिल जाएगा. और आई डोंट थिंक देन दिस 19,600 विल बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस. मुझे नहीं लगता दैट विल बी अ वेरी एक्चुअली स्मॉल रेजिस्टेंस इफ इट्स ब्रेकिंग 19,480. So actually this analysis was very important, so I wanted to discuss it. So 19,600 को नज़र में रखना है, बट उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 19,480, जो कि मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी ब्रेक हो जाएगा, मे बी कमिंग वीक 1 2 दिन में ही. तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है. So you can keep this two level of resistance 19,480 and 19,600 on your radar. और ब्रेक सपोर्ट तो वही है 19,200 है. Nifty 50 level for coming week can be 19,200 to 19,600 only after breaking 19,480. निफ्टी बैंक ने बहुत ही अच्छे से इसने भी 43,700 का सपोर्ट लिया है, and this support is intact. The link I will give in I button. You can check the same level. 43,700 को इसने नहीं तोड़ा. It did not try to break it. और यहाँ से ही उसने रिवर्सल ले लिया. और अभी इसने भी लास्ट फ्राइडे ऑल्सो
showing very good move, very positive move. And yes, it has given the 1%. It was 1% up on Friday. If 1% up is not easy for index, so और निफ्टी ने भी 1% का अप मूव दिखाया था लास्ट फ्राइडे. दैट वाज वेरी वेरी पॉजिटिव एक्चुअली साइन फॉर इंडियन स्टॉक मार्केट. सो इसमें भी मुझे पॉजिटिविटी दिख रही है. स्टिल आई विल स्टिक विद द सेम लेवल 43,700. और ऊपर के लेवल पे अगर एनालाइज करें तो यही 44,950, या फिर आई विल टेक अ राउंड फिगर, सो 45,000 का एक यहाँ पे भी वही रेजिस्टेंस, द ओल्ड रेजिस्टेंस, ये वाला. This resistance is again intact. The same level actually intact in Nifty Bank. I am not changing anything in this निफ्टी बैंक लेवल. तो अभी चूंकि ये बीच में ही है और अभी इसने पॉजिटिव साइन फ्राइडे को दिखाया है, तो आई फील इट विल ऑल्सो गो अप. सो let's see on what happens on next week, as global market is also quite okay. तो लगता है कि निफ्टी बैंक भी ये 45,000 तक एक रेजिस्टेंस फेस कर सकता है इन कमिंग वीक ओनली. निफ्टी बैंक लेवल फॉर कमिंग वीक कैन बी support 43,700 and resistance 45,000. So this can be the level for Nifty Bank for coming week. Now we'll discuss the Nifty IT. Yes. So this is actually the important index I wanted to discuss. Actually, I can see some very good breakout is coming up for this index. Nifty IT. Nifty IT is facing a long-term resistance here, which is actually 31,000 650 के आसपास. एग्जैक्ट बोलूँ तो 31,658 है. तो 31,650 के आसपास ये काफी दिनों से एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है. एनीवेज आईटी, निफ्टी आईटी इज ट्रेडिंग अबव 20 ईएमए, तो इट इज एक्चुअली गुड एंड शोइंग गुड अप मूव. बट स्टिल if it's breaking this level, the 31,650, that definitely is going to be a good breakout for Nifty IT. और ये रेजिस्टेंस ब्रेक करके ऊपर जाता है तो आई can assure it is definitely going to a good breakout for Nifty IT, and for all IT stock you are holding, it's going to give you very good time in coming month. You should keep your eyes on this 31,650 level for Nifty IT for your IT stock. Nifty IT level for coming week 31,000 to 31,650. Breaking 31,650 will give a breakout in Nifty IT. These kind of regular update of Nifty and index. Stay connected to the channel. Signing off.